I stare at a podium, far and vast, where curtains unfold carefree. I find time fading, all stars twinkling and sailing. On a podium, I see sages suffering, the thespians wondering, and writers wandering. Good afternoon, esteemed Vice Chancellor, HOI, all professors, and our enthusiastic audience. Today, I'm Mahinchana. And I, Vidhi Chauhan, welcome you all to the second day of Faculty Development Program on the topic Challenging the Status Quo Voices in Literary Studies. On the Please first keep day your of just 1 minute. Please keep your mics a little distant because your voices are cracking. Mics a little further away from your mouth. Ma'am, is it better now? It's a little better. Yeah, start. On the first day of the event, we got the privilege to hear from two women writers, Dr. Kusum Khemani, who spoke about her recent book, Lal Basti Ki Amrit Kanyan, about the lives of prostitutes, and Ms. Ritu Priya Khare spoke about her book, Ganga Yatra, based on the spiritual land of Banaras and the sacred shores of Ganga. उम्मीदों ने भरा है मुझ में कुछ कर गुजरने का हौसला जहाँ कोई भी हो कर ही लूंगा एक दिन फतेह. To begin this beautiful and bright afternoon, I invite our very own Professor Dr. Kumkum Ray, who is a senior Cambridge honors graduate from Lady Shri Ram College of Delhi University. She has been awarded with Best Thesis Award for her PhD on Henry Louis William D, the first Anglo-Indian nationalist poet. She is an education and poet activist with 46 years of experience in teaching. She is the founding member, professor, and director at MIT School of Languages. Ma'am is wind beneath our wings, our best guiding light. The existence of MIT School of Languages is because of her love, all the efforts and dedication. And as a team, we continue to grow under her guidance. I request you, ma'am, to please greet our dignitaries. Good afternoon. We are beholden to Dr. Sandeep Awasthi and our other expert to have given us this time, and I'm sure the students will learn from his words. Without taking much time, we need spaces which have not been covered. We need voices which have not been heard. And with this intention in mind, we wanted to deliberate on voices that could be heard and that would probably lead to new areas of research. Because the status never continues, what is constant in nature is change. And therefore, let us be the ones who make the change, who are the change. And this is a learning experience for everyone because everyone has their own perspectives, their own dimensions of realizing where voices are suppressed or voices cannot be, heard. So with these words, thank you, Dr. Sandeep Awasthi, for being here with us and sharing your valuable time. Thank you, students. You may continue with the program. Thank you, ma'am, for your words, always so full of wisdom. You're truly an inspiration to us. A monologue without meaning is just a blank word, lacking vision and emotions. So, what's life in literature without challenging what we hear and know? Nothing at all, you know. With this, I invite our first guest, Dr. Sandeep Awasthi, who's a well known author, research guide, film writer, and the chairperson of International Literary Association. We welcome you, sir. The stage is all yours. Thank you.
First of all, I heartily congratulate Vice Chancellor of MIT University and Madam Kumkum Rai. Such a wonderful occasion and day for all researchers and experts. Now I can speak in Hindi because I am a writer of a Hindi and research guide of the Hindi language. Sir, little, all sir, sorry to interrupt you. I'm not the Vice Chancellor. I am the Professor and Director of Amity School of Languages. So I beg your pardon, Okay. and please continue in any language. That's not a matter of, any compulsion. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने टॉपिक आप सबके लिए चूज किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP में न्यू होराइजन एंड न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वेरी इनोवेटिव लर्नर प्रोसेस। इसके अलावा जो मेरा मेन हमारा फोकस रहता है वो नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के ऊपर, जो अक्सर हमारी युवा पीढ़ी या हमारी फैकल्टी हम उसे इग्नोर कर देते हैं या हम उसको जरा सा इम्पोर्टेंस कम देते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्तों, इत्तेफाक ये भी है कि आप लखनऊ से बोल रहे हो और मैं अभी एट प्रेजेंट आगरा में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, और आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान में अपने लेक्चर देने के लिए आया हुआ। कल मेरा लेक्चर था, आज मैं फ्री हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम ये देखें हमारा इंडियन कल्चर, इसकी लेगेसी थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी है और वो लेगेसी हम तक कन्वे हुई है बाकायदा और हमारे ही थ्रू आगे जाएगी, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे मैडम कुमकुम रॉय हो, चाहे हमारे अन्य फैकल्टी मेंबर हो, और चाहे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हो, PG के या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा इंटरेस्ट, हमारा टेक्निकल या हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस वह टोटली कंप्लीटली सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास हमें जोड़ना होगा हमारी मॉरल वैल्यूज, हमारी बुक्स, हमारी हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी और सबसे बढ़कर हमारी इंडोलॉजी। अगर आप कभी और आगे पढ़ेंगे जानेंगे तो देश के जितने भी IITs हैं, चाहे कानपुर IIT हो, चाहे खड़गपुर IIT हो या मुंबई IIT हो, या मुझे जाने का अवसर मिला है, वहाँ सब जगह दो डिपार्टमेंट एसेंशियली हैं। एक फिलोसफी ऑफ रिलीजन और दूसरा लिटरेचर। जब मैं फर्स्ट टाइम गया बॉम्बे IIT, मैंने पूछा कि IIT के टेक्निकल सेक्शन में फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी और लिटरेचर का टॉपिक या सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, और वहाँ 4 फैकल्टी, ईच IIT में 4 फैकल्टी हैं, 2 फॉर फिलोसफी एंड 2 फॉर लिटरेचर। तो वहाँ ये आंसर मिला, मुझे भी खुशी हुई। ये करीब 20 साल पहले की बात कि IITians को मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज और हमारी लेगेसी के बारे में बताने के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए इमोशनली भी और जिंदगी के अंदर भी इन दोनों सब्जेक्ट की फिलोसफी और लिटरेचर की जरूरत पड़ती है। कानपुर IIT में गिरिराज किशोर वहाँ के रजिस्ट्रार रहे हैं, बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कई बार वहाँ पर राइटर्स इन रेजिडेंसी के तहत कई लेखकों को वहाँ बुलाया और वहाँ मौका दिया। कहने का मतलब ये है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्कॉलर ये ना समझें केवल एक ही स्ट्रीम की नॉलेज, एक ही डिग्री से हम आगे का सफर 21st सेंचुरी लगभग 3 डिकेड्स हो चुके हैं उसे तय कर पाएंगे। नहीं, ये समय मल्टीटास्किंग का समय है, ये समय ऑलराउंडर्स का समय है, और ये टाइम नो टाइम टू वेस्ट वाला जोन है। किसी के भी पास टाइम वेस्ट करने के लिए ना है और ना होना चाहिए। इसके लिए हमें एक साथ एकेडमिक तो स्ट्रॉन्ग तो होना ही है, साथ ही MIT यूनिवर्सिटी जिस तरह से ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है जो काफी आगे तक जाएंगे, उसके तहत हमें अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, और साथ ही मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा अभी कुछ देर बाद। गुड बुक्स, अच्छी किताबें,
लिटरेरी बुक और साथ में इंडियन कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल नॉलेज के लिए वो हिंदी की मैं जानकारी भी अंतिम पार्ट में दूंगा, वो हमारे पास होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा 20 जुलाई 2020 को जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी लॉन्च हुई और 31 जुलाई को वो पूरे देश में रिलीज कर दी गई, उसमें कई तरह की रिसर्च को लेकर के, अब गौर से पढ़े पूरा ड्राफ्ट, इत्तेफाक से जो उसकी कमेटी में थे एक्सपर्ट, वो कई हमारे वाइस चांसलर मित्र थे, मेरी उससे बात 1 साल पहले से हो रही थी कि क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में रिसर्च को सोसाइटी से, समाज के साथ और मैनकाइंड के साथ और क्लोजर किया गया है और नजदीक लाया गया है। हमारे इनोवेशंस हो, हमारे रिसर्च के टॉपिक्स हो, या हमारे कहा जाए कि बोलते उसको डेजर्टेशन हो, ये सब के सब यूजफुल होने चाहिए और कंटेम्परेरी होने चाहिए। वो दिन, वो समय हटा दिए गए जब हम एक कोई सा भी ओल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के, इस पे ऑलरेडी 100 लोगों ने काम किया हुआ है, हम भी ये काम कर लेते थे और उसके मार्क्स हमारे एपीआई स्कोर में या एकेडमिक भी हमारे लिए काउंटेबल हो जाते हैं। ये रोका गया है 2021 से, और अब इनोवेशन का जमाना है, स्टार्टअप का जमाना है और नई नई टेक्निक्स को विथ ह्यूमन वैल्यूज, विथ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड मैनकाइंड के हिसाब से करने की जरूरत है। मैं आगे बढ़ता हूं। नेशनलिटी और इंटीग्रिटी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इंडिविजुअली हमारे अलग अलग सोसाइटी, हाउसेस, कास्ट, क्लासेस हैं, लेकिन जब हम एक प्रेमिसेस में, एजुकेशनल प्रेमिसेस में आते हैं, तब वहां सिर्फ और सिर्फ हम एक स्टूडेंट, एक लेक्चरर या एक लर्नेबल पर्सन के तौर पर बिहेव हमें करना चाहिए और वही हम करते भी हैं। वहां हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने एवरी डे, मैं अपने यूनिवर्सिटी में भी कहता हूँ, एवरी डे ईच स्कॉलर एंड प्रोफेसर को ये सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या अपनी ड्यूटी, क्या अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया, क्या मैंने आज अपना बेस्ट डिलीवर किया। अगर हम ये सोच लें कि हम एवरी डे एज ए स्कॉलर भी, एज ए प्रोफेसर भी अपना बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो यकीन जानिए नेशनलिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, इंटीग्रिटी को मजबूत करने में ये बहुत है। और मैं दोस्तों और कहना चाहता हूँ इसी कंसेंट में कि जब हम प्रीमिसेस में, कैंपस में इंटेलिजेंट बिहेव करते हैं, ओबीडियंटली बिहेव करते हैं और वेल टू डू बिहेव करते हैं, वहीं जब हम प्रीमिसेस के बाहर निकलते हैं, अपनी सोसाइटी या अपने जोन में जाते हैं, तब हम पता वापस अपने आप भूल जाते हैं और फिर पहले जैसे लेस लर्नर या लेस इंटेलिजेंट या लेस इनोवेटिव बन जाते हैं। ये डिफरेंस हमें खत्म करना। ऐसा नहीं चलेगा कि हम एक जगह तो इंटेलिजेंट है और बाकी जगह हम लेस इंटेलिजेंट है या स्टूपिड। दूसरी बात, बुक्स। मैंने अमेठी का भी बहुत नाम सुना है, कई जगह कैंपस है, मैं जो एक कैंपस में राजस्थान में गया भी हूँ, वहाँ की लाइब्रेरी बहुत एनरिच होती है और मुझे ये कहने में संकोच नहीं, कई फॉरेन की अच्छी किताबें भी आपके वहाँ मिल जाती हैं जो बहुत रेयर होती है, बहुत कॉस्टली होती है। प्लस पूरा पीडीएफ सिस्टम हो, ई बुक सिस्टम हो, सब वहाँ अवेलेबल है। लेकिन फैकल्टी, यंगस्टर साथी, स्टूडेंट्स, रिसर्चर कितना उस लाइब्रेरी फैसिलिटी का, उन बुक्स को स्टडी करने का मौका अपने आप को देते हैं, ये एक सोचने की बात। हम अक्सर किताबों से, चाहे वो ई फॉर्म में हो, चाहे वो हार्ड कॉपी फॉर्म में हो, पता नहीं कोई डिस्टेंस बना के रखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं जहां जहां गया हूं अभी लॉकडाउन खुलने के बाद, वहां सब जगह मैंने बुक्स की, अच्छी किताबों की और उस पर डिस्कशन करने की जरूरत को बताया है, महत्व दिया है। कुछ जगह मेरे 7 दिन के लेक्चर थे, मैं वहाँ कैंपस में ठहरा भी था, तो वहाँ मैंने मौका मिला तो 2 दिन के बाद ही एक बुक का नाम अनाउंस किया कि सब इसे पढ़ करके आए और फिर डिस्कस करें। के अलावा जो मैं आपके लिए जोड़ना चाहता,
रिसर्च के टॉपिक, चाहे आप मीडिया में हो, चाहे आप आईटी सेक्टर में हो, और चाहे आप एमबीए हो, बीबीए हो, या अदर फील्ड में। There's some technical glitch, so everybody please be patient. Sorry for the technical glitch. Dr. Sandeep Awasthi will be joining us now.
ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, यस सर। तो मैं आगे बता रहा था उसमें कि बुक्स के लिए यदि हम इनोवेटिव लर्नर नहीं है और लाइब्रेरीज में जाकर के जब हम सीखते हैं, तो ये इंडिया जो है ये न्यू वेव इंडिया है, जहां पर टेक्नोलॉजी का, आईटी सेक्टर का और नॉलेज का बूम आया हुआ है, जो आने वाले 2 डिकेड्स तक एटलीस्ट छाने वाला है, चलने वाला है। यदि आप इस बूम के साथ नहीं हैं या इस बूम में आपका इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है, तो वक्त है, यही समय है, हमें इस बूम को पहचानना होगा और इसमें जुड़ना होगा। आगे जोड़ना चाहूंगा कि जब हम लॉजिकल बात करते हैं, तो मैं एक सिंपल बात कहता हूं जिससे हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हमारी सिविलाइजेशन वास्तव में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन रही है। जो इनोवेशंस हम आज देखते हैं वो हम हजारों साल पहले हमारे यहाँ हो चुके हैं। 2 एग्जाम्पल दूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, रुचिकर बात यह है, वह सिविलाइजेशन मातृ सत्ता प्रधान थी, यानी विमेंस ओरिएंटेड सोसाइटी हमारी इनिशियल रही है लगभग 500 इयर्स तक। उस समय में आप कल्पना करें, सारा ट्रेड, सारी की सारी पॉलिटिक्स, सारा का सारा स्टेट अवेयरनेस, सब कुछ विमेंस के हाथ। और उसी काल में हमारे मानव ने, आप कल्पना करें, व्हील, पहिए का आविष्कार उस मानव ने किया। सिंपल एक पहिए का आविष्कार। और जो हमारे म्यूजियम्स हैं, सालार जंग म्यूजियम हो या हैदराबाद का म्यूजियम हो या आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोलकाता वाला दफ्तर हो, वहां पर वो व्हील के इनिशियल फोटोग्राफ अवेलेबल हैं। एक केवल व्हील का आविष्कार मानव ने इंडस वैली सभ्यता में करीब 50-100 साल बाद किया। अब आगे सुनिए किस तरह से व्हील ने, एक इनोवेशन ने उनकी लाइफ बदल दी। उस व्हील में उन्होंने, उस वक्त कई तरह के जानवर थे, इसमें खच्चर थे या घोड़े थे या बैल थे, बुलक कार्ट थी। उसने उस व्हील में अपनी बुद्धि से एक तख्ता फिट किया, एक प्लैंक फिट की और उसको गाड़ी बना दिया। और उस गाड़ी से उसने ये इनोवेशन किया कि जिस तरह से मैं यहाँ इस बस्ती में रह रहा हूं, तो क्या आप इमेजिन करें 5000 साल पहले, जहां कोई लाइट नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, बस उस मैन काइंड में, उस ह्यूमन बीइंग में ये विचार आया कि मेरे जैसे और लोग कहाँ रह रहे हैं। उस व्हील के थ्रू, उस गाड़ी के थ्रू उसने ट्रैवलिंग शुरू किया और वह 10, 15, 20 किलोमीटर घंटे की दूरी से, 1-2 घंटे की दूरी से दूसरी बस्तियों में, दूसरे कबीले में पहुंचा और वहां के लोगों से उसने इंटरेक्शन किया, उनसे जुड़ा। कहने का मतलब यह है, सभ्यता की शुरुआत ही कनेक्टिविटी से, एक दूसरे को जानने से, समझने से और व्यू एक्सचेंज करने से हुई। इसके अलावा सिंपल उस व्हील के आविष्कार से, पहिए के आविष्कार से उस मानव ने यह भी तय किया कि हमारे यहाँ सपोज कपास है या आपके मसाले हैं, स्पाइस हैं, बहुत सारे होते हैं। आपके वहां कपास होती है, क्लोथिंग होती है, अन्य चीजें होती है। उसने एक्सचेंज शुरू किया कि मैं आपको मसाले दे रहा हूं या अन्य चीजें दे रहा हूं, आप मुझे वो चीजें दीजिए जो मेरे पास। ट्रेड की शुरुआत सिंपल एक व्हील बनने से शुरू। और ट्रेड ही क्यों, आपस में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और सबसे बड़ी बात हार्मोनी, आपसी सद्भाव, आपसी विश्वास की बात वहीं से शुरू। और इस चीज को मैं प्रेजेंट में, कंटेम्परेरी समय में लाके जोड़ता हूं। आज जब हमारे पास गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, तो क्या हम वेल कनेक्टेड हो पाए हैं? और यदि कनेक्टेड हैं, तो क्या हमारे अंडरस्टैंडिंग, मॉरल वैल्यूज, फेथ, बिलीफ, क्या ये पहले की तरह से स्ट्रॉन्ग हैं या हम इस मामले में पीछे आ गए? हम फेथ का रिटर्न फेथ से नहीं पा रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग का रिटर्न मिसअंडरस्टैंडिंग से पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये
जैसे ही हम अपने गैजेट्स को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को, मोबाइल फोन को ऑफ करते हैं, हम अपने फ्लैट में, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में अकेले हो जाते हैं। हम रियल वर्ल्ड से कम कनेक्ट हो रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं, जो इट्स ए वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस टू। इसी के साथ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये और बात जोड़ना चाहूंगा, जब हमारी वेदों की विचारधारा, अंतिम 10-15 मिनट में वेदों पे बात करना चाहूंगा। वैदिक सभ्यता जब आई, नेचुरली वैदिक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आई। वैदिक सभ्यता में बाकायदा वेदांत और अद्वैत वेदांत और आदि शंकराचार्य का आप सबने नाम सुना, जिनके नाम पर आज भी भारत के चारों कोनों में श्रृंगेरी मठ हो, द्वारका मठ हो, या आपकी शारदा पीठ हो, या गोवर्धन मठ हो, चारों कोनों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, बद्रीनाथ में शंकराचार्य के वो मठ आज भी भारत को एक रास्ता दिखाते हैं, विश्व को एक दिशा देते। तो उन मठों में की स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य ने आज से लगभग 850 साल पहले वेदांत में भी अद्वैत वेदांत, इसका मीनिंग है नॉन डुअल, दैट मीन्स गॉड, वी एंड यू आर नॉट डिफरेंट, बट वी ऑल आर सेम, यूनिक, वन थिंग। गॉड, हम और आप एक ही हैं, ये आदि शंकराचार्य ने अपने विचारों से, अपने व्यू से सिद्ध की। और देखिए कितनी बड़ी हार्मोनी की बात है, उन्होंने एक विश्व धर्म की स्थापना उस वक्त 850 साल पहले कर दी। और हम ये भी पाएंगे मेरे साथियों, मेरी फैकल्टी मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स, कि आदि शंकराचार्य ने नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए बहुत सिंपल तरीका दिया, श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण मीन्स लिसनिंग, मनन मीन्स टू थिंक, और निध्यासन मीन्स टू एक्ट। थिंक देन एक्ट, लिसन, थिंक एंड एक्ट। ये तीन चीजें उन्होंने आज से 850 साल पहले एस्टेब्लिश की, जो आज भी हैं। और मेरी एक किताब, 11वीं किताब इस विषय पर आ रही है, जो मैं आपके विश्वविद्यालय में भेजूंगा, आप देखिए। इसके अलावा जब हम ये देखते हैं अक्सर, और गलती आपकी हमारी नहीं है, जो हमें रॉन्ग इतिहास, गलत इतिहास इत्तेफाक से स्कूल्स में पढ़ा दिया गया, उसकी वजह से हम अपनी लेगेसी को, अपनी सभ्यता को, अपने वेदों को, उपनिषद को भूल गए। हमें लगा हम तो अभी अभी ही क्रिएट हुए हैं, चीन, जापान, अमेरिका हमसे आगे है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध हमारे समय में लगभग ईसा पूर्व 6th सेंचुरी में हुए। 6ठी शताब्दी में हमारे यहाँ के राजकुमार शुद्धोधन, जो आगे गौतम बुद्ध के नाम से कहलाए, वो जापान, चाइना और इन जैसे लगभग 50 से अधिक देशों के सेंटर गॉड हैं। वहां क्रिश्चियनिटी नहीं है। चाइना, जापान और अन्य ऐसे देशों में भगवान गौतम बुद्ध की पूजा होती है। जापान का राष्ट्रीय धर्म बुद्ध धर्म है। चाइनीज बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। चाइनीज नॉट द क्रिश्चियनिटी, नॉट फॉलोइंग द क्रिश्चियनिटी। तो गौतम बुद्ध जो हमारे देश से, हमारे विद्वान, हमारे डायस्पोरा के तहत उन देशों में पहुंचे, वहां के निवासियों को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में, उनकी बेसिक शिक्षा बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक ही अगर आप याद रखने, वो ये थी कि एवरीथिंग, हर चीज क्षणभंगुर है, डेस्ट्रॉयबल है, यानी हर चीज नष्ट होने वाली है। कोई भी थिंग, थॉट्स, ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं है। कोई भी थिंग, ऑब्जेक्ट, थॉट्स इमॉर्टल ही है, इमॉर्टल नहीं है। ये बुद्ध ने प्रिंसिपल सिद्धांत अपना दिया। और इसके बाद 4 आर्य सत्य दिए, से बोलते हैं 4 नोबल ट्रुथ। फर्स्ट, दुख, सॉरो। सेकंड, दुख का कारण। थर्ड, दुख से बचने के उपाय। और फोर्थ,
वैराग्य या दुख से निवृत्ति पाना, उपाय ने जान लिए, अब उस पर एक्ट करना। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध ने दिए और ये पूरे विश्व को इतने पसंद आ कि हमारे अपने गौतम बुद्ध आज विश्व के 50 से अधिक, एग्जैक्ट नंबर है 70 देशों में बौद्ध धर्म उनका नेशनल धर्म। आप कल्पना करें, हमारा एक भारतीय, हमारा जेनेटिक, हमारे जीन का व्यक्ति वहां भगवान है, गॉड है। हमारे यहाँ भी काफी हिस्सों में उनको भगवान माना जाता है। तो ये नॉलेज, न्यू थॉट्स, और जब बुद्ध ने ये न्यू थॉट्स, नए विचार दिए, हवा में नहीं दिए, पढ़ करके दिए। उस वक्त पाली भाषा, पाली लिपि चलती थी। उस पाली लिपि में बुद्ध ने एक और इंटरेस्टिंग बात की। बुद्ध ने स्वयं तो ज्ञान प्राप्त किया जीवन से, लाइफ से, अनुभवों से, एक्सपीरियंस से, लेकिन गौतम बुद्ध इतने इंटेलिजेंट थे, आपको आश्चर्य होगा, इस सब किताबों में लिखा है। उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा कि मेरे कहे को, मेरे व्यूज को, मेरी बातों को कोई नोटेड डाउन नहीं करेगा, कोई भी मेरे विचारों को किताब में नहीं लिखिएगा। सोचें, उस वक्त आज से लगभग लगाइए 2500 साल, ईसा पूर्व 6th BC, बिफोर क्राइस्ट 6th BC गौतम बुद्ध का कार्यकाल था, और पावापुरी नेपाल में, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। तो उस वक्त बुद्ध ने, जब वो बुद्ध बन गए, मैं बताना चाहूंगा मेरे यंग दोस्तों को, बुद्ध होने का उस वक्त मीनिंग था जैसे आज के अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, या कहा जाए महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी जी, इस तरह की पर्सनैलिटी होने का अर्थ था बुद्ध उस समय। इतना क्रेज था, इतना उनका वो ऑरा था। उस वक्त के इस ज्वल्यमान स्टार व्यक्तित्व बुद्ध ने कहा, मेरी कोई भी स्पीच, मेरी कोई भी बात को राइट डाउन नहीं किया जाए, नो किताब, कोई किताब। आप समझते हैं इसका मीनिंग? इसका मीनिंग उन्होंने ये अपनी शिक्षाओं पर जो उन्होंने इन्वेंट की कि हर चीज क्षणिक बात है, मोमेंट्रीनेस है, कि एक क्षण, जैसे मैं या आपकी ही बात करें, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ 240 पर, तब आप और हम जो थे, अब लगभग आधे घंटे बाद हमारे अंदर बदलाव आ गया है, हमारे अंदर चेंज आ गया है। हम वो पहले वाले नहीं हैं। इस आधे घंटे में कई स्पीचेस हुए, कई लोगों ने बात की, आप मेरी बात सुन रहे हैं, व्यूज में एक्सचेंज हो रहा है, तो हम चेंज हो रहे हैं। इस बदलाव की बात बुद्ध ने की। तो साइंस अब मानती है, अब कहती है कि ह्यूमन ब्रेन में, हमारे हार्ट में, हमारे बिहेवियर में कीनली, शार्पली एवरी मोमेंट चेंज होता है। इसे बुद्ध 2500 साल पहले प्रूव कर गए, कह गए, और अपने स्वयं के ऊपर अप्लाई भी कर कि मेरे व्यूज को, थॉट्स को लिखोगे तो मैं उसको कल फिर बदल दूंगा, परसों के माहौल को देखते हुए नए विचार दूंगा, नए थॉट दूंगा। वो मानते थे थॉट्स या व्यू हवा की तरह से प्रवाहवान है, गतिवान है, उसे एक जगह बांध कर नहीं रख सकते। ये थे द ग्रेट बुद्ध। इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो विमेन से जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई, जो ये बताती है कि बुद्ध हो या महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो या हमारे नरेंद्र मोदी हो, हम सभी कहीं ना कहीं एक इंसान पहले है और हम में भी कमियां हैं। जैसे आप सब जानते हैं, बुद्ध विवाहित थे, राजकुमारी, एक बहुत अच्छे राजघराने की, बहुत सुंदर, जो उस वक्त उनकी उम्र शायद 18 साल होगी राजकुमारी की उम्र, वो उनकी पत्नी थी। और शायद जब शादी हुई और 22 साल की उम्र में जब बुद्ध ने वैराग्य लिया, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और राहुल नाम का उनका बेटा। बेटे के बारे में ज्यादा उल्लेख है, बेटी का लोग उल्लेख शायद नहीं करते, एक बेटा ही उनका बताते हैं, राहुल नाम। तो बुद्ध ने जब वैराग्य करने का निश्चय किया तो ये किंवदंती है, एक सुनी सुनाई बात है कि वो रात को अपने महल से निकल गए और 1-2 साल किसी को नहीं मिले। राजकुमार थे, ये आप सब जानते हैं, क्षत्रिय थे बाई कास्ट, हालांकि भगवान की
या ऐसे स्पिरिचुअल फिगर की कास्ट नहीं होती, वो सबके होते हैं। तो उनकी ढूंढवाई भी हुई, ढूंढा गया, नहीं मिले। राजघराने का वारिस राजकुमार चला गया। 2-2.5 साल बाद पता लगा फला फला जगह बुद्ध प्रकट हुए हैं, बुद्ध ने सिद्धि प्राप्त की, हिमालय से आ गए हैं। और बोरी टाट जो आप देखते हैं उसका उसे बोलते चीवर, वो चीवर पहनते हैं, सारे बाल मुंडवा लिए हैं और हाथ में भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांग करके ही भोजन करते हैं, अन्यथा भोजन भी नहीं। और जगह जगह प्रवचन देते हैं। 1-2 साल और बीते और बुद्ध का प्रभाव बहुत बड़ा बढ़ने लगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, बुद्ध के इस सिंपल सिद्धांत से कि हर चीज मोमेंट्री ने से एक क्षण के लिए है, उसके बाद बदल जाती है, पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई। क्योंकि वो दौर था जब कुछ कहा जाए कि ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग लोगों को डरा रहे थे कि स्वर्ग में आप यहाँ गाय दान करें तो वहां स्वर्ग मिलेगा, आपको ये दान करना है वरना पाप में जाओगे, नरक में जाओगे। बुद्ध ने कहा पाप पुण्य नरक स्वर्ग कुछ नहीं है, जो कुछ है यही जीवन है, प्रेजेंटनेस है, वर्तमान है। इसीलिए स्वर्ग का डर या सुख का भय दिखा करके लोगों को तंग करना बंद करो। और ये सिद्धांत, ये पॉलिसी लाखों लोगों को बहुत पसंद आई कि हाँ, हम खुद तो भूखे रहें और किसी के कहने पर अपना गाय दान कर दें, रुपए दान कर दें और हम भूखे रहें। बुद्ध ने कहा नहीं, कोई दान करने की जरूरत नहीं है, पहले अपना वेलफेयर करो, अपने को स्ट्रॉन्ग करो, वही स्वर्ग है। और सिद्धांत दिया अप दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहो, किसी के आगे हाथ मत बढ़ाओ। ये थे बुद्ध। तो जब उनके हजारों अनुयायी हो गए और भारत, आप कल्पना करें कि जो भारत आप आज देखते हैं, बुद्ध के समय का भारत इससे 8 गुना बड़ा था। पाकिस्तान तो अभी बना है आजादी के बाद, बांग्लादेश पाकिस्तान से बना है, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सुमात्रा, जावा, तिब्बत, ये सब कुछ भारत में। उस भारत में बुद्ध हुए थे। तो बुद्ध जब ऐसी उनकी मेधा सब जगह फैल गई, तो वो एक दिन खबर आया कि बुद्ध अपने होम टाउन आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। पूरे नगर में, राजधानी में, पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, हलचल मच गई। बुद्ध इस राजघराने का बड़ा वारिस आ रहा है। बुद्ध आए एकदम निसंग, चेहरे पे तेज ओज, बाल एकदम गंजे और मोटे वस्त्र बोरी के टाट। जो राजकुमार रेशम में सोते थे, हीरे मोती जवाहरात पहनते थे और 56 पकवानों खाते थे, वो एकदम ऐसे आ रहे थे और उन्हें ये एहसास नहीं कि वो कहाँ है क्या है। और पीछे पीछे फॉलोअर्स की भीड़, नगर में कदम रखते ही नगर सेठ, अमीर लोग, बड़े लोग सब उनकी अगवानी में खड़े और उनको लेकर पैदल पैदल जा रहे हैं। और बुद्ध के पीछे उनके सैकड़ों शिष्यों की फौज। और बुद्ध चलते चलते एक जगह रुके, वो उनका खुद का स्वयं का राजमहल था जहां से वो निकले थे। और उन्होंने उस, ये इतिहास में दर्ज है, मुझे अवसर मिला वैशाली जाने का, मैंने वहां देखा, पढ़ा, सुना। बुद्ध ने उस राजमहल में दस्तक दी और भिक्षा के लिए हाथ फैलाया। आप कल्पना करें कितना कितना रोमांचक था। उस राजघराने का, उस राजमहल का वारिस भिक्षुक के रूप में वहां हाथ फैलाए भिक्षा मांग रहा है झोली। आगे और जानेंगे तो आपको रोमांच हो जाएगा कि भिक्षा देने स्वयं राजकुमारी आती है, बुद्ध की पत्नी आती है राजघराने की। और पति पत्नी का पहली बार आमना सामना हो रहा है कि जिस पत्नी को, जिस राजकुमारी यशोधरा को वो सोता हुआ छोड़कर चले गए थे, वो अब कई सालों बाद अपने पति को बुद्ध के रूप में देख रही है। पति पत्नी आमने सामने होते हैं और वो राजकुमारी, ये इतिहास में दर्ज है जिसमें स्त्री की ताकत दिखाई गई है भारतवर्ष में। वो राजकुमारी बुद्ध के भिक्षा के फैले हुए हाथों में उनके पुत्र राहुल का हाथ दे दी कि मैं तुम्हें राहुल की ही भिक्षा देती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र ही दान में देती हूँ। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू वहां चलता है वैशाली में,
पाटलिपुत्र में, बिहार क्षेत्र में, कि उस स्त्री का, उस पत्नी का, जो राजकुमारी थी, ब्याह कर लाई गई थी राजकुमार से, उसका क्या कसूर था तो उसे जीवन भर के लिए अकेला छोड़कर आप बुद्ध बनने चले गए। उस राजकुमारी ने कहा, बुद्ध की पत्नी ने कहा कि आपका पुत्र राहुल आगे जाकर फिर किसी स्त्री का के साथ ऐसा जीवन बर्बाद ना हो, इसलिए मैं अभी से इसे आपको सौंप। ये घटना में बहुत प्रचलित है। कहने का अर्थ ये है, भारतीय मेधा में, भारतीय लेगेसी में, भारतीय परंपरा में स्ट्रॉन्ग वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, ये हमारे देश में शुरू से है, फॉरेन में नहीं थी। हमें इस झांसे में, ढकोसले में नहीं आना, इस हिपोक्रेसी में नहीं आना कि हमारी भारतीय महिलाएं कभी भी वीक थी या कमजोर थी। अब सोचिए, बुद्ध को जवाब देना, और बुद्ध को ऐसा जवाब देना, वो भी उनकी पत्नी के द्वारा, आज के जमाने में भी ये रिमार्केबल है, यादगार है। तो विमेन्स एम्पावरमेंट के इस देश में, जहाँ नॉलेज का, ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत छुपा हुआ है, हमें नए और सच्चे और फैक्चुअल किताबों के पास जाना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। बहुत सी घटनाएं हैं। मैं अंतिम 5 मिनट में 2 बातें और कह करके अपनी स्पीच को, वाणी को विराम दूंगा। दूसरी घटना आती है आदि शंकराचार्य की, जो बुद्ध से लगभग 800 साल बाद। आदि शंकराचार्य भी ऐसे ही पूरे देश में प्रचंड वेदों की और वेदांत की, ये बात ध्यान रखिए, बौद्ध दर्शन जो बातें कहता है वो वेदांत का ही एक हिस्सा है। अद्वैत वेदांत भी ये मानता है कि मानव ही मनुष्य है, नॉलेज, ज्ञान और ईश्वर हमारे ही अंदर है, लेकिन उसको पहचानना पड़ता है, उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है, बस। तो आदि शंकराचार्य इसी के तहत पूरे देश में वेदांत की पताका फहराने जा रहे थे, जाते थे, और जहां जिसमें, चाहे बंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे पटना हो, और चाहे वाराणसी हो, जो काशी था उस वक्त, वहां के विद्वानों से शास्त्रार्थ डिबेट करते थे। वो उन्हें कन्विंस करके फिर अपने पंथ की, अपने वेदांत की वहां स्थापना। ऐसे ही वाराणसी में बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे, उनका नाम था मंडन मिश्र, उनकी विदुषी पत्नी थी भारती। वहां शास्त्रार्थ की तैयारी हुई कि पूरा काशी जो है मंडन मिश्र के आधिपत्य में, उनके ज्ञान के भय से आक्रांत था, कि उनकी गली के, उनके मोहल्ले के पशु पक्षी तक संस्कृत के श्लोक बोलते थे, ऐसे मंडन मिश्र। उनसे शास्त्रार्थ के लिए शंकराचार्य पहुंचे, और शंकराचार्य की आयु उस वक्त महज 22 वर्ष थी। कल्पना करें, 22 वर्ष का व्यक्ति, युवा, सारे वेदों में पारंगत था, और आदि शंकराचार्य वास्तव में शिव जी के अवतार माने गए हैं, स्थापित। और शास्त्रार्थ हुआ, और शर्त यह थी कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ पूरा काशी देखिए। कहता तैयारी हुई, 100 विद्वान यहाँ बैठे, 100 सामने, और उनकी पत्नी विदुषी भारती भी मंडन मिश्र की बगल में बैठी। आप कल्पना करें, आपको कुछ लोगों ने पढ़ाया होगा या आपने सुना होगा, प्राचीन काल में घूंघट रखवाते थे स्त्रियों से, उनको कमरे में बंद रखते थे, उनको आजादी नहीं थी। सब झूठ, सब बकवास, सब फरेब, कुछ नहीं था। जितना सम्मान इज्जत पुरुष को थी, उससे ज्यादा सम्मान इज्जत और मेधा स्त्री को प्राप्त थी। तो भारती उनके बगल में बैठी। इसका भी चित्र संग्रहालयों में उपलब्ध है, उस शास्त्रार्थ का। हिस्टोरिकल था, ऐतिहासिक। शास्त्रार्थ में यह तय हुआ कि दोनों के गले में फूलों की माला डाली, और जो शंकराचार्य और मंडन मिश्र, जो हारने लगता, हारेगा, उसकी माला अपने आप, उसके फूल मुरझा जाएंगे, वो हारा हुआ मान जाए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन शास्त्रार्थ चलता रहा, और तीसरे दिन से मंडन मिश्र शंकराचार्य के तर्कों के सामने हार नहीं। पूरा काशी के विद्वान देख रहे थे कि मंडन मिश्र पे 22 साल के युवा शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भारी पड़ गए। की पत्नी भी भारती देख। तीसरे दिन का समापन होते होते जैसे ही मंडन मिश्र आखिरी सवाल का जवाब देने में हिचकिचा रहे थे, हार रहे थे, विदुषी भारती ने अपने पति के गले से माला निकाली और खुद पहन ली।
और कहा कि अब शास्त्रार्थ मैं करूं। पूरी भरी सभा चौंकी। इसलिए नहीं कि एक स्त्री शास्त्रार्थ करेगी, इसलिए कि नियम तो यही था कि मंडल मिश्र और शंकराचार्य में शास्त्रार्थ होगा। भारती ने, ये चतुराई भी है भारतीय स्त्री की, भारती ने कहा कि भाई तय तो ये हुआ कि फूलों की माला मुरझा जाएगी, वो व्यक्ति हारेगा। ये तय नहीं हुआ था कि वो फूलों की माला किसके गले में होगी, कहाँ होगी। बात सही थी, ये तय नहीं हुआ था। तो भारती के साथ शास्त्रार्थ मंडल मिश्र ने शुरू किया। और आप सबको बता दूं, इतिहास में दर्ज है, किताबों में दर्ज है, वेदों की और शंकराचार्य की जीवनी में दर्ज है कि भारती ने अविवाहित ब्रह्मचारी शंकराचार्य से यौन अवस्था के, काम सूत्र के, कामेच्छा के सवाल पूछे कि स्त्री गर्भ धारण कैसे कर, गर्भ धारण का संस्कार क्या होता है, स्त्री पुरुष संबंध क्या होते हैं। सीधे सवाल उस महिला ने पूछे, विदुषी। आदि शंकराचार्य गड़बड़ा गए, उनके पास इसके उत्तर नहीं थे, इसका अनुभव नहीं। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, माता मेरे पास इसके आंसर नहीं है, लेकिन मैं कुछ समय का विराम चाहता हूं, 2-4 घंटे का या एक दिन का, मैं आपको इसके आंसर दूंगा। सभा ने सहमति दी। आदि शंकराचार्य के पास सिद्धियां थी, वो वापिस गए अपने शिष्यों के साथ, 2 शिष्यों के साथ थे, और उन्होंने पर किया प्रवेश, पर किया प्रवेश यानी अपने प्राण को निकाल कर बाहर ले जाना और किसी अन्य के शरीर में डाल देना की विधा का इस्तेमाल। उन्होंने देखा कि कुछ 100 कोस की दूरी पर एक राजा अपने प्राण त्याग रहा है। उन्होंने अपनी सूक्ष्म सी आत्मा को बाहर निकाला और पर किया प्रवेश के माध्यम से उस राजा में प्रवेश कर दिया। उसकी 2 रानियां थी। उन्होंने 3 दिन वहां बिताए, सारी विद्या, सारा ज्ञान प्राप्त किया और वापस आए। शिष्यों ने उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा था एक गुफा के अंदर। दोबारा उनके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया, जीवित हुए और फिर शास्त्रार्थ में हाजिर हुए और विदुषी भारती के स्त्री पुरुष संबंधी, गर्भधारण संबंधी सभी प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए। और अंत में विदुषी भारती ने भी अपनी हार स्वीकार की और शंकराचार्य को प्रणाम किया। और तब से भारत में सब तरफ वेदांत का, अद्वैत वेदांत का एक सूत्रीय धर्म की स्थापना हुई। और उन्होंने भी, आदि शंकराचार्य ने भी अपने शारदा पीठ का प्रमुख आचार्य मंडन मिश्र को ही बनाया और उनका नाम दिया श्री सुरेश्वराचार्य। वहां पर आपको श्री मंडल मिश्र के आगे सुरेश्वर मिश्र के नाम से हेड की उपाधि मिलेगी, वहां दिखाई देगी। तो मित्रों, साथियों, अब मैं इन सब बातों को समराइज कर चुका हूं और कहना चाहता हूं, आईआईटी हो, तकनीक हो, ह्यूमैनिटीज हो या मीडिया हो, हमें नॉलेज को, ज्ञान को अपडेट रखना है, अपग्रेड रखना है। और ये नहीं सोचना कि मैं इस स्ट्रीम का हूं तो मैं इस स्ट्रीम की तरफ ध्यान नहीं। एक ऑलराउंडर शख्सियत और किताबों को पसंद करने वाले व्यक्तित्व की ही आज जरूरत है। मुझे उम्मीद है एमआईटी विश्वविद्यालय के द्वारा इस कार्यक्रम में मेरे द्वारा दिए गए इस विचारों को, इन बातों को आप सभी अपने जीवन में अपनाएंगे और इसका उपयोग करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। Thank you, sir, for such enlightening words. Moving on, now it's time for some treasures, tales, fun, and delight. We have a small quiz for all of you. Now I request the technical team to please present the slides for the quiz. The name of the quiz is Identify the Contemporary Authors. Here, we will read out a quote to you all, and you will have to guess the author. For example, here, the quote is by Mulkraj Anand. Moving on to the next slide, the first question.
We all owe death alive. Can anyone guess the author? Raise your hand if you know the answer. You can also put your answer in the comment box if you know the answer. A small hint, this writer is a very controversial writer and was in very, very much controversy due to his book. If I name the book, you all will be able to guess the writer. Anyone? Exactly. Thank you. Moving on to the next question. The next quote is: the wheel turns and turns and turns. It never stops and stands still. Can you guess the author? Very well-known Indian writer. You can drop answers in the chat box, or you can raise your hand to answer the question. Ishita, unmute yourself and you can go ahead. Yes, I would like to answer. It is Anita Desai. That's right. Thank you. Yes, it's correct. It is from her book, The Village by the Sea. Let's move on to the next quote. It is basically a phrase, a very well-known phrase, Hulk smash. It is for all the Marvel fans. Can anyone tell me the answer to this? It is by none other than Stanley, the king of the Marvel. Let's move on to the next quote. Shoot all the blue jays you want, if you can hit them, but remember, it's a sin to kill a mockingbird. The answer to this question is hidden in the quote itself. Can anyone answer? Yes, Vidhi? Is it Harper Lee? Yes, it is Harper Lee of To Kill a Mockingbird. Moving on to the next quote. Today is today, but there are many tomorrows. Guess the author. Yes, Ms. Gauri Dubey, please. Dan Brown. Yes, it is Dan Brown from the Vinci Code. Moving on to the next quote. The secret of life, though, is to fall 7 times and get up 8 times. Guess the author. Yes, Ishita? Is it Paulo Coelho? Yes, exactly. Can you please name the book from which the quote has been taken?
The Alchemist. Yes, very good. Thank you. Moving on to the next question. If the lamb sees the knife, she panics. Her panic seeps into the meat, darkens it, fouls the flavor. Guess the author. All right. Good, good, good. At last. Thank you. I repeat the quote. If the lamb sees the knife, she panics. Her panic seeps into her meat, darkens it, fouls the flavor. Guess the author. Yes, Libby? So I would like to try. I may be wrong. It is George R. R. Martin. Yes, exactly. It Am is I George R. R. audible? Martin. It is George R. Yes, sir. R. Good, Martin. Hello, good Rohit afternoon, ji. And the sir. book, Yes, sir. Yes, sir. You're audible, sir. We'll start in a while, sir. Just 2 minutes. We'll start, sir. Please. You're audible, sir. yes, the quote has been taken from the book by George R. R. Martin, A Song of Ice and Fire, which inspired the iconic enemy-winning HOV series, that is Game of Thrones. Now let us move on to the next quote. Monsters are real, ghosts are too. They live inside of Rohit us ji. and sometimes they win. Guess the author. I'll give you all a hint. It is by the writer of the very famous novel, It. Rohit ji, I'm able to see. I think I've already joined, but I'm not able to. Huh? Yeah. No, 1 second. I am not able to hear you on the line. That's my problem. Oh, but what I'm saying is I am not able to hear anything from the side. Okay, right, right, right. Okay, thank you, thank you. Yes, ma'am, it is Stephen King. The answer is in the chat box. Yes, it is correct. With here, I would like to end the session. Thank you for being such an interactive audience. The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace by Mahatma Gandhi. With these words, I now invite Mr. Dr. Prasad Gorinpalli, Gandhian scholar and managing trustee of Gandhi King Foundation. Dr. Prasad Gorinpalli holds a master's degree in Gandhian thought and a degree of Master of Philosophy in Gandhian thought and peace. In addition to master's degree in Cognizant law, he is a Gandhian scholar and an active member of the Gandhian organization and Sarvodaya movement in India. We welcome you, sir. The stage is all yours. I think there's some technical issue. Sir is not able to hear us. I don't know why.
So can you hear us? Yeah, Rohit ji. Correct. I am afraid if I am trying to rejoin, if I am not able to join at all, what would happen? Anyway, okay, then I'll speak one way. Okay, right. So, good Namaskar, afternoon. Professor Namaskar, Bolanpalli. We are so delighted to have you. everybody in the A man of session. such experience I'm will sorry that definitely benefit our I'm not participants. very comfortable with And the technology part of that. okay, So I sir. realize we are But old it's a timers pleasure to and it's a we are not pleasure able to to have keep you. pace with the new generation. And of course, I do organize online programs. We call it Sir, Understanding Gandhi every Sunday for the last nearly 2 years. But even then, I wonderful, can't sir. claim any proficiency or a kind of control on the kind of programs, on the technology, on the computers, on the internet, on the software. So we are still in the learning process, which is not adequate. At a stage in life, learning perhaps is also difficult. And we believe that we are all lifelong learners. Learning cannot stop by acquiring a degree or doing a course. Learning should be a lifelong process. So I'm extremely happy today to be with Amity University in Lucknow and the Department of English. And you're working on the Faculty Development Program, FDP. And this is something like every individual should improve himself, herself on a continuous basis. As I said, there is no uh, end to the learning process. And Gandhi said, my learning will not stop with the dissolution of the flesh, he said. That is, learning is a process beyond during my life, even beyond my life, we continue learning. That is a kind of concept that Gandhi has put before us. So it is very essential that learning should continue, and especially for the faculty in the universities and the education institutions, it becomes very paramount that we should keep fresh, abreast, up to date. But earlier, several years ago, maybe 25 years, 30 years ago, teachers did not have a challenge. Now there is a challenge. In those days, say some 30 years back, where no internet was there, or computers were not so much in vogue. So whatever teacher has access to the books, that is the knowledge. That's what the teacher would pass on to the student. I call it a one-way traffic. The teacher knows what he's going to talk. The student does not know that because that is a specific prerogative of the teacher. And only the teacher has access to those books, and that information he passes on to the students. So teacher has a prerogative and a priority and also a better status in the sense that he has got a controlling position. But today the teacher is not that. The student knows more than the teacher on the same subject. The student has an access to the internet. He can Google,
get all the information much before the teacher can talk. So today's teacher has to be on the tenterhooks and continuously upgrade the information, knowledge and all that. So the advantage teacher has mainly in terms of his wisdom rather. The student has more information, teacher has a wisdom. So how to process the information, how to analyze the information, how to put it in a perspective, that's what teacher can do. Therefore, I believe in a education system where it's a collaborative system between a teacher and the student. I can't say that I will teach and you learn. It is not possible. We have to learn together. It is a togetherness is the order of the day, and learning has to be a joint effort of the teacher and the student. So I am extremely grateful to Rohit Yadav ji and Rohit Shivpati ji and other friends in Amity University, Lucknow, for thinking of me and inviting me and giving me this great honor to be part of this event. And we have the pleasure and honor of working with Amity University from Gandhi King Foundation, which is an organization to promote peace, non-violence around the world in a very humble way. And we mainly focus with the students, the universities, so that the kind of ideas which are very important for the world are taken to the students. It is not just merely the academic input that the students must get, but beyond the academics, how I become a responsible citizen. That is more important. So our focus, our approach in working with various universities is that how do we make an individual, a student, basically a student, how do we make him a better individual, a good human being? How do you become a good human being? And then how do you become a good citizen? Now, this is, I think, in the education system missing how to create better human beings and better individuals and better citizens. So how do we bring in this kind of mutuality, mutual respect, understanding each other, accommodating each other's sentiments, each other's feelings, each other's faiths? Because it is not possible that you have an identical person in terms of thinking, behavior, attitudes. And if I look to that, you can't be the same person 5 years ago, 1 year ago, and tomorrow you may change your ideas. So you are not the same over a period of time. Therefore, expecting somebody exactly to be like you, according to your thinking, is not possible. This plurality has to be respected in a society. I don't know why I came onto this planet Earth, but I'm here. You are here. We are all here. And each one have come to this particular stage. We are talking to each other at this point of time, having journeyed through various places, having journeyed through various routes, various times. Ultimately, our thinking, our approach to life, our concept, our philosophy is our own individual making. And this will not be exactly the same of anybody else. Therefore, we have to believe, we have to understand, we have to accept that there is a plurality and I should respect others so that others would also respect me, so that I will be a responsible person in the society. So this kind of an understanding from the students, from every individual, is a must. It is a basic requirement. So when we talk about the student attitude, we should look for how the student develops a broader phenomena, broader perspective, broader vision, and not a closed-mindedness, but with a wide range of thinking, accommodating others, accommodating dissent, accommodating differences. And then how do we become a responsible person in the society on the one side
and in the environment, in the nature. This is something that has to be seen. When we talk about the status quo, I think we are comfortable to remain where we are. But if you take a challenge, if you are really dynamic, if you are taking risk, you will always challenge the status quo. Why should it be like this? Why should it not be like something else? That means when you challenge status quo, it gives rise to questioning. If you don't question, nothing happens. All progress in humanity can be possible only when you question. The question comes from the attitude of challenging, not accepting the present. If it is something like this, why is something like this is here? I challenge it. For example, you take the issue of untouchability in the society. How can you treat or ill-treat a fellow human being? You challenge it. It is out of the challenge, challenge the status quo, a new beginning has come. Similarly, when the country, our country was under subjugation under the British rule, British people, British government was ruling India. I'm happy with that. So there is no need for a challenge. But the moment you say, why should British rule me? Why should British exploit me? Because their model was economic, that is political domination for economic exploitation. They wanted to loot the wealth of a country and use India for their raw material requirement and also as a market for their finished products. This had gone for about 200 years nearly, the British rule. But then, if you accept it, there is no change. So when you challenge the status quo, when you challenge why should my country be exploited by a British nation, then it gives rise to a freedom struggle and the kind of problems, the kind of deprivations, the kind of sufferings that our people had, even going to jail, losing their property, losing their everything virtually. In fact, families got ruined. So, when you do not accept any status quo, the present day situation, you rebel against it. And then, when you rebel with a questioning, challenging, you also take responsibility. That I am responsible for a better society. So, I'll work for that change. If you are not dynamic, if you are complacent, you retire. There is nothing for me to do. But the moment you take the challenge, you raise the questions, you take responsibility, you become dynamic, then you organize. That's where I can take the example of Mahatma Gandhi, who challenged the status quo. It started way back in South Africa when he went to South Africa in 1893. As a young lawyer, at the age of 23, he went to South Africa to assist a legal case. That is, he wrote in his autobiography that I was trying my luck. And there was also temptation to see a new country. So that was the only reason. Gandhi never wanted to become a social reformer. He never wanted to become a freedom fighter. He was just like you and me. He wanted to eke out his livelihood so that maybe a little better standard of living is possible. But when he went to South Africa, within the first 1 week, that he landed in Durban and was traveling by train to Johannesburg. When the train reached the station Pietermaritzburg, some white people entered the first class compartment where he was traveling and said, "This is first class compartment. It is meant only for the white people. You are a colored man. You have no right to travel. You go to the van compartment like a third class. You go to the van compartment." Gandhi says, "I have a first class ticket.
because I had been a barrister. And throughout when I was in England, I was traveling first class. So in England, they did not bring in that kind of distinctions. So they maintained society on the principles of liberty, freedom, fraternity, democracy, and such kind of values. But when it comes to the question of colonies that Britain ruled, the set of rules were totally different. There was segregation, marginalization. The Indians were subjected to a lot of discrimination. They were kept in different kind of ghettos or slum areas. They were not allowed to live in the main city areas. So Gandhi challenged that kind of a situation, and he said, as a human being, I have a right to travel the first class. And when he insisted on that, he was thrown out of the first class compartment in Peter Marisburg railway station on 7th June 1893. So that incident changed his entire course of life. A person who went to South Africa to earn his livelihood and nothing else, no other expectations. That incident, he could pocket the insult like most of us do. If you get insulted, you say, "ठीक what happens? No problem." But he did not accept the insult. He took it as a challenge. He did not pocket the insult. He said all human beings are equal. Why should a white skinned person have a superiority or myself? How can color create a distinction or the ups and lows in the society? Just because you are a white skinned person, you are great. And if you are colored people, you are not great. What is this kind of distinction? So people, out of their selfishness, they used every possible denomination for their benefit, for their advantage. And if you can call some people Harijans or the scheduled castes or backward people, and they are not given the due rights even to walk on the pavements, and they are confined to extremely poorer and very filthy kind of areas, and filthy kind of activities are interested to them. This, in fact, more than putting them into that kind of a situation, it is keeping their mindset in that kind of frame is much more dangerous. So he will think that he lives for the benefit of the landlords. We were working in villages in Mahbubnagar district near Hyderabad. We work in villages and for the last 30-40 years. And when we work with women, they earn just 3 rupees a day as the daily wage in those days in the 80s. They get 3 rupees for a daily labor. And when you meet them, they don't say namaste. They say Banchandura Kalmukta. That is, I am your slave, I touch your feet. This is a salutation. So when you look deep into their eyes, you do not get a feeling that they think they have got an existence of their own. But they think, as you can understand from looking into their eyes, that they exist to subserve the interest of the landlords. So if they survive, that's enough. So in that survival, if they don't crave anything from the society, any wealth they don't acquire, they live on their meager wages or meager living, meager food, meager clothing, meager housing. So they become like machines serving the masters. So you created a whole system in such a way where a few people can exploit millions of people. So exploitation, or you can take it as a bonded labor or serfdom or feudal lords in the villages, the feudalism. So you have seen different kinds of systems where people were exploited. So one of the reasons or one of the facets of that is untouchability. If you call a person untouchable, then his mind will also remain at that level, and they will be subjected to exploitation much easily. So when
People like Baba Sahib Ambedkar, Mahatma Gandhi, Lohia, and others have challenged that kind of status quo and said that no, this can't be, this is not acceptable. Untouchability should go, bonded labor should go. And Dr. Martin Luther King Jr. has taken up the issue of segregation in the United States, the civil rights movement which he led with the inspiration of Gandhian spirit of truth and nonviolence, is a classic example. So the United States of America, which is a very wealthy country, it had the blight of having slave labor, slavery. So Abraham Lincoln, when he was the president, he abolished the slavery. Though slavery has gone, the black and white, the colored people, the segregation, the distinction, deprivation for those people, and the husband of the black family is bought by somebody. The wife is bought by another person. Children become orphans. So the concept of family is destroyed. So that is how large number of population, so many people were kept under this kind of perpetual poverty. And to keep them under poverty, you should also keep their minds in poverty. So there had been systems devised for this kind of inhuman act in this whole world. Every country faced this kind of issues. So when Dr. Martin Luther King Jr. took up that issue with the Montgomery bus boycott movement, he was able to mobilize people. And he said, I will offer satyagraha. So I challenge the status quo. So in the buses, the town buses, white people can sit in the front and back rows were reserved or they're meant for the black people. And if some white person enters and there is no seat for the white person, black people should get up and offer their seat to the white person. And sometimes because you have to pay money into the bus from the front side, the front gate, front door, and they have to run back and enter the bus from the back door. They can't enter from the main door. So this kind of restrictions. When you go to a restaurant, white people tables are different, black people's tables are different. Restaurants, white people's the restrooms are different, black people's restrooms are different. So everywhere they constantly remind you that you are a black person and you are not equal with us. You are inferior to us. We are superior. We are the bosses. We are the masters. Some of the European countries, they believe that they are born to rule the world, like the Britain, for example, or the Nazi Germany. They believe that they are a superior race in the world. Now tell me, can you convince anybody in the world they're inferior to anybody else? Can anybody make somebody accept that position? When we take the position that we are all equal, all human beings are equal, equality is a tenet, equality is a principle. In fact, Gandhi's concept of Sarvodaya, that is welfare of all, everybody's welfare, not somebody's welfare at the cost of somebody else. So when Gandhi talked about Sarvodaya, Sarva Udaya, welfare of all, happiness of all, enlightenment of all. So this welfare of all is possible when there is equality of all. But we never allowed this kind of equality to exist in society. Even within a family, boys given preferential treatment to a girl. If there is a limited food, the first food is fed to the boy. If there is something remaining, then it goes to the girl. Education opportunities, they go to the boy first, then the girl child. So have we not seen the discrimination of the girl child? So by gender we discriminated people, that is subjugated them, we exploited them. By caste we exploited, by color we exploited.
By region we exploit, and this region is greater and that region is not so great. So all these discriminations, all these injustices which were meted out in various societies, they developed because of some vested interest. Supposing you were in their position, then how do you take it? So when we look at any injustice, something which is wrong, which has to be removed, that kind of blight should be removed, it should be challenged, and that's where the social movements come, whether it is Mahatma Gandhi led freedom struggle in India or civil rights movement of Dr. Martin Luther King Jr. or Cesar Chavez in the United States. He fought for the rights of farm laborers in California and against apartheid. Nelson Mandela also fought. So whenever they raised voice, they were troubled like anything. They were put into prison. Gandhi was put into prison. He was in prison for about 2,882 days. He was in prison during his lifetime. What is the crime that he committed? Because he was challenging. So it's a question of keeping your conscience. When you say the status quo, do you accept it or do you challenge it? So you become conscious, you use your conscience. In fact, we find in America a lot of people who protest war. Though as a nation, as a country, America went to war with many, many countries. Many, many wars America fought in different parts of the world. There is a section in this country, in this America, who refuse their moral support to war initiatives. They say war is wrong. In fact, Martin Luther King Jr. also talked about war being a very, very destructive thing and we should not go for war with any country. So those people refused to join the military service, which was compulsory in the United States. If you don't join the military service, you will be jailed. You have to compulsorily take to the military service. So those people who protested the government for going in war with other countries, they were jailed. And they're called the prisoners of conscience. So your conscience says war is wrong. So I should not allow my country to go for war. So I took a stand that I protest the government, I challenge the government, its decision to go for war. So let government put me in jail. This is where the concept of satyagraha comes. That is, when you offer a protest in a peaceful way, you should also be willing to take the consequences. The consequences are that you may put into jail. You may be subject to a lot of hardships. But I am standing, I am suffering or accepting all suffering because I stand for an ideal. I will die for my ideal. Change I want to bring about in my society, I would even die to bring that society, that kind of a change. So it is a kind of commitment, and we find a lot of people who had been writing on this social issues, equality, then the kind of hatred that is being spread to bring divisions. And those people who wrote on these issues, they were met with death. Gauri Lankesh was killed because of the writings that she was doing. So the gagging the press, uh, silencing the voices, this is what the forces, those who are against the change, they would resort to. But then
those people who are committed to bring in that kind of a change, they are not afraid of the kind of, I don't call it a punishment, but what kind of repression the opposite forces use. We are willing for that. If that willing is not there, perhaps you can't take the stand that I want to bring a change. So, to my mind, the effort from all of us should be to look at uh, what is wrong in the society, what is not for common good, what is not for universal welfare. We challenge it, we refuse it, we reject it, and we'd like to work for a peaceful society, for a better society, for a clean society, for an environmentally sustainable society. What right do I have to pollute the air or pollute the water, pollute the soils? So, whatever is not acceptable, you may say it is the state of affairs in the present day. But that state of affairs we don't accept. So we have to create this kind of challenging attitude, questioning attitude among the young people, and that's how we look to great people like Mahatma Gandhi, Baba Sahib Ambedkar, and such great people to whose lives are inspiring, who never accepted any kind of segregations or any injustice, ill treatment, inhuman treatments. So I say thank you very much for this wonderful opportunity. I do not know how I will be able to hear you because I find some technical problem. And if there is some questions you leave through the phone, I'll be very happy for some more interactions. And I'm extremely grateful to Amity University Lucknow for this wonderful program and the opportunity you have given. And I look forward to more such opportunities. In fact, I would prefer because there is some technology standing in between you and me. I prefer nothing of the sort. That is, I would prefer physical meetings like come there. I would like to come to Lucknow, meet all of you, talk to you, and see what we can do together. So I bring greetings to you all from Gandhi King Foundation. And now, right now, I'm in the United States. It is early morning around 6:30. A beautiful day. It is just becoming dawn now. And at this point of time, you given me this opportunity. I'm extremely happy and grateful to you, and particularly to Rohitji. Thank you very much. Namaskar. So now I invite Mr. Rohit Yadav, who's the alumnus of Amity School of Languages and is an experienced assistant professor with a Rohitji, you may demonstrated use your phone to talk so that I can at least listen to. history of working in the higher education industry. He's skilled in acting, stage direction, communication training, English, and theatre. I request Sir to give the vote of thanks. Ha, Rohitji. Yeah, Sir, yeah, you're very. on mute. I can hear you on the phone. Greetings to all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this sound occasion. We are thankful for the resilience of Mother Nature, that she continues to adapt and survive despite the way that we humans misuse natural resources. We are thankful for the bounty of our earth, that we are all well nourished this harvest season and beyond. I express my gratitude to the Almighty for showering this benediction and thereby making this program a beautiful success. I extend my heartiest thanks to the head of our department, the distinguished director, Professor Dr. Kumkum Ray,
Words are not enough to thank you for your constant guidance and support, ma'am, in shaping and making all of us. It's you who radiated a source of energy within us. My special thanks to the Honorable Speaker, Dr. Sandeep Avasthi, sir, for sharing his experience, and Dr. Kumar, for joining us despite being having busy schedule. We will surely challenge the status quo after hearing from such eminent speakers. It was indeed thought-provoking session. My sincere thanks to Ms. Shraddha Srivastav, under whose guidance we are able to obtain necessary operations to conduct this FDP. I am very much thankful to all our current and formal faculty and non-teaching staff members who always stand by us and motivate us. I feel proud and thank you for making this event a successful one. At this juncture, I would like to congratulate the wonderful anchors, Ms. Mahin Shah and Ms. Vidhi Chauhan, for holding this session all together. I would request the technical team to accept my deepest gratitude. If time is money, then today you have spent millions for us. Thanks to the audience for their presence and patience. Have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you, sir. Now I request everybody to please switch on their cameras so that the technical team can take screenshots and keep the memory of today's event forever with us. I also request everyone to kindly fill out the feedback form that is sent on your WhatsApp and join us again tomorrow for the same event. Thank you. Yeah, Rohitji. Thank you, Rohitji. No, it's wonderful for me. I just of course got up around 4:30 in the morning. So it is perfectly fine for me. Wonderful. Thank you. Thank you. Have a good evening. Bye bye. So I request everybody to join us at 2:30 tomorrow for third day for our third day event. And tomorrow the speakers are Dr. Arjun Chauhan and Mr. Mahendra Mishra.